From Kashmir to Kanyakumari, India is a spellbinding mosaic of culture, tradition, languages and an extraordinary mingling civilization. Keeping its age-old culture maintained, today the country is taking huge strides in the path of development. Hello, I'm your host Uzma Jafri, and today in our episode of My India, we bring you some of the stories that will give you a glimpse of our country's diversity. The fascinating land of Odisha is known for its varied cultures and traditions that are celebrated with much fanfare all around the year. Ranging from Puri's Rath Yatra to Bhubaneshwar's temple festivals, the state never fails to leave its visitors awestruck with its enamoring fiestas. Recently, it witnessed the 43rd edition of Baisakhi Festival, where the conglomeration of various cultures occurred under one roof. Take a look. Powerful beats of drums, dhols and folk dances rocked the Odisha's capital Bhubaneshwar as it hosted the 43rd edition of Baisakhi Festival, a cultural extravaganza that marks the happiness of New Year's arrival. Held at Ravindra Mandap, the three-day fete was organized by Chinta O Chetna, a socio-cultural organization that was established in 1980. The festival was celebrated in a grand manner with several presentations given by the artists in presence of Lord Jagannath. ये पांडी जो है ये जगन्नाथ जी का परंपरा, उड़ीसा की परंपरा, और यहाँ पर नया साल का ये फंक्शन है। तो नया साल में महाप्रभु जगन्नाथ पांडी करके आते हैं। ये एक ही संस्था है जो कि बैसाखी में पांडी करते हैं, और ये भी पूरी मुक्ति मंडप पंडित सभा के अनुमोदन क्रम से हो रहा है। ऐसा नहीं कि हम मनमानी करते हैं। जो महाप्रभु आते हैं वो मंदिर से आते हैं। आप लोग ने देखा है कि कैसे पांडी हुआ, सारे पंडा लोग भी आए थे, और जैसे पुरी में होता है उतना तो ऐसा नहीं हो सकेगा, लेकिन उसी का थोड़ा बहुत झलक यहाँ पर आते हैं। Ranging from Odissee's Ghoda Nach to Bharatnatyam, Manipuri to Kuchipudi, a number of classical dance styles were presented during the festival. While some of the items were aimed at the connoisseurs, others catered to the popular taste. An award ceremony was also organized by Chinta O Chetna, wherein veterans in different fields of arts and culture from India and other countries were felicitated. A major highlight of the event was the performance by the Srijan organization that performed a beautiful Odyssey number. हमारा आज का प्रस्तुति था माधव भजनम, जो कि जगन्नाथ जी को ही एक ट्रिब्यूट है, और ओडिसी तो उनके लिए ही प्रसिद्ध है। तो इसीलिए हम लोग, दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि हम लोग पहंडी के टाइम ही हम लोग अपना ऑफरिंग दे पाए और नृत्य के रूप में दे पाए। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। और आज का जो वैशाखी फेस्टिवल है ऑर्गेनाइज बाय चिंता ओ चेतना, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा वो हमें अपॉर्चुनिटी दिए हैं, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा उनको धन्यवाद। Earlier, the festival was conceived as a platform to showcase the myriad art forms of Odisha, but later on, it was made open to all kinds of traditional art forms in the country. Organized for last many years, the festival has become a major feature in the cultural calendar of the city and a colorful celebration of art and culture. Indian festivals are a show of the multicultural religious bond which is shared between different religious communities. An example of this unshakable bond was recently witnessed in the southern city of Madurai, where Muslim tailors stitched clothes of Hindu devotees for the grand Chithirai festival. Take a look. Festivals in India are not just a way of merrymaking but also play a significant role in bringing together people of all religious faiths at a single spot. Recently, the grand festival of Chithirai in Madurai city witnessed a sea of devotees from different faiths coming together and rejoicing the occasion. Adding a flavor of religious unity to the grand event, the costumes of devotees for the procession of Lord Kallazhagar was made by Muslim tailors. மூணாவது தலைமுறையாக நாங்கள் தைக்கிறோம். தாத்தா எங்கள் அப்பா இப்போ நான் இந்த மாதிரி மூணாவது தலைமுறை வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஆனால் 2 வருஷமாக திருவிழா இல்லாதனால
இந்த வருஷம் திருவிழா நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க, நம்பி இருக்கோம். எங்களுக்கு அந்த ஜாதி மற்ற இதெல்லாம் இல்லை, எங்களுக்கு ஹாப்பியாக தான் இருக்குது எங்களுக்கு. அதை நாங்கள் எம்பதும் சம்மந்தம் மாதிரி தான் நாங்கள் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதனால் நாங்கள் அதை பற்றி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. எல்லா பேரும் மதுரை மாவட்டக்காரங்க, வெளியூருக்காரங்க எல்லோரும் வந்து வாங்கிட்டு போகிறாங்க. நான் முஸ்லீமாக இருக்கோம், அதை பற்றி நாங்களாம் அப்படி ஒன்றும் நினைக்கல. எல்லா பேரும் வந்து வாங்கிட்டு போவாங்க, ஒன்றும் எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை. எம்பதும் சம்மந்தம் தான் எங்களுக்கு, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இன்ஷால்லா. Tailors from the Muslim community are involved since generations in designing these special costumes. This year, the celebrations of the festival were special as they were organized at such a grand level after the long pandemic break. அதான் வந்து நம்மளுக்கு வருமானம் வந்து அந்த அளவுக்கு அந்த இருந்தாலும் ஆண்டிய முன்னேற்றத்தில் வந்து நம்மளுக்கு எப்பவும் போல் உள்ள கஸ்டமர்ஸ் வந்து ரெகுலராக முன்னைக்கே வந்து இப்போ இந்த வருஷம் வந்து 2 வருஷம் திருவிழா இல்லை அப்படிங்கும்போது வந்து நிறையா பேருக்கு வந்து வந்து இந்த ஒரு வருஷம் புதுசாகவே போடுவோம் அப்படி அவங்களே எங்களுக்கு வந்து வாய்ப்பு கொடுக்குறாங்க. நிறையா வந்து இந்த வருஷம் புதுசாகவே போட்டுருவோம் அப்படின்ற மாதிரி வருது. ஆனால் அது வருஷத்துக்கும் இந்த 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த வேலைகளுக்கும் இப்போக்கும் ரொம்ப குறைஞ்சி தான் இருக்குது. இப்போ அந்த கொடி கட்டிட்டாங்கன்றதுக்கும் கொஞ்சம் நல்லா வேலை வந்து சந்தோஷமாக வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். The Chittirai festival celebrates the celestial wedding of goddess Meenakshi, an incarnation of goddess Parvati, and Lord Sundareshwar, an incarnation of Lord Shiva. The procession of Lord Kallazhagar is one of the main events of the festival. It begins from Algar Kovil in Madurai and ends at Ramayar Mandapam on the banks of Vagai river. People irrespective of their religion participated in this religious ceremony. It is an example like these that showcase the beautiful bond of brotherhood and unity that prevails in the entire length and breadth of the country. Now, a roundup of some of the major stories that made news recently. Sikhs across India celebrated the birth anniversary of Guru Arjan Dev, the 5th Guru in Sikhism, by paying a visit to a holy shrine of Golden Temple in the northern state of Punjab. ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਉੱਚ ਨੀਚ ਛੂਤ ਛਾਤ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੈਗਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ. This year marks the 459th birth anniversary of Guru Arjan Dev. The sixth scripture of Adi Granth was compiled officially by him for the first time. Arjan Dev preached unity among all castes and creeds of the society. जिस दरबार सब सचखंड गुरु अर्जन देव जी गुरपुरब मनान आए वाहिगुरू परमात्मा का ही बख्शना सबनू सबर संतोख सिद्धा बख्शे. There is a total of 10 gurus in the Sikh religion. The religion has its roots in the preaching of Guru Nanak, who was the first guru. The Indian Navy launched the 6th and final indigenously built Scorpion submarine. The submarine name Vakshir of Project 75 was launched at the Mazagon Dock Shipbuilders Limited shipyard after prayers and rituals. भारत की छठी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन वाक्षीर का लॉन्च हुआ है. ये हमारे देश के लिए बड़ी खुशी की बात है कि लगातार एक के बाद एक 6 सबमरीन हमने अपने ही देश में बना के अपनी नेवी को सुपुर्द की हैं. The submarine that has been named after the sandfish will be sent for sea trials before being delivered to the Indian Navy next year. Veteran Bollywood actor Anil Kapoor, his son and actor Harshvardhan Kapoor, and actress Fatima Sana Sheikh launched the trailer of their upcoming Netflix drama thrill film Thar in India's showbiz capital Mumbai. You can't say that this is a pure Western. It's got love, it's got passion, it's got violence, it's got suspense, it's a thriller. तो ये सारी चीज़ें हैं बिकॉज आज की फिल्म है ये एंड डायरेक्टर और राइटर ने कोशिश की है कि today's younger generation can relate to it.
Actors Satish Kaushik, Jitendra Joshi and Mukti Mohan along with director Raj Singh Chaudhary were also in the attendance at the trailer launch event. The dark western tale has been shot in the sandy terrains of desert state of Rajasthan. It brings to life the journey of a cop when an otherwise dormant city is riddled with murder and corruption. And now we will take you to the 42nd Urs of Chandsa Baba in Midnapore city of West Bengal, which was attended by people of different religious communities. Cutting across the religious line, devotees thronged the Dargah of Chandsa Baba in Midnapore town of West Bengal. The Dargah witnessed a number of pilgrims who came together in the spirit of humanity and commemorated the Urs or death anniversary of the Sufi saint. During Urs, devotees, including women and children, offered prayers and holy chadars at the shrine. বলছেন যে আমার কাছে যেই আসবে আমি তার মনের ইচ্ছা পূর্ণ করব কারণ আমি হিন্দুকেও চিনি না আমি মুসলমানকেও চিনি না আমি সেটাই চিনি আমি মানুষ আমিও মানুষ হিন্দুও মানুষ মুসলমানও মানুষ এখানে কোনো জাতিভেদ নেই This was the 42nd Urs of the Sufi saint. During the Urs of the saint, devotees from nearby cities of Kolkata, Tamruk, Haridrapat and others visited the shrine to seek the blessings of the saint. For years, Dargah has been standing strong as an epitome of brotherhood, as its caretaker is a Hindu man named Chamat Setua who is taking care of it since 1980. আজ বাৎসরিক বাবার জন্মদিন উরুস হিসাবে পালন করা প্রচুর লোকজন বাইচিতে আসে দুই সম্প্রদায় দুপুরে প্রত্যেক বৃহস্পতিবার খাওয়ানো আজ তো বিশালভাবে লোকজন রয়েছে বা দুই সম্প্রদায়ের চাদর চাপাচ্ছে মানে প্রসাদ গ্রহণ করছেন চাঁদবাবার এখানে এটা মারাতলা ড্যাবলা পাঁশকুড়ার এমনকি তমলুক ফমলুকে লোক আছে হ্যাঁ হরিদ্রাপাট বহু দূর দূরান্ত লোক কলকাতার লোক আছে এই আজকে কলকাতার লোক উপস্থিত আছে তাদের আপনি শুনতে পাবেন The message of peace and brotherhood comes out loud from these holy sites that have been acting as a symbol of communal harmony for ages. Let's move on to India's showbiz capital Mumbai that recently hosted the 40th edition of Hunar Haat. An initiative of the Ministry of Minority Affairs, the fiesta aims to uplift the artisans, craftsmen and traditional culinary experts of the country. In Mumbai, Hunar Haat presented a wonderful confluence of craft, culture, music and food to the visitors. Have a look. Organized with the theme Craft, Cuisine and Culture, the 12-day-long Hunar Haat in Mumbai became a one-stop shop for credible and high-quality Swadeshi products. Aimed at providing market exposure and economic impetus to artisans and craftsmen of the country, the event saw a participation of about 1,000 artisans from over 30 states and union territories this year. From handmade cloth bags to bronze and bamboo home decoration items, a number of products were displayed at the Haat, leaving visitors spoiled for choice. Besides being a platform to preserve, protect and promote indigenous products, the event is also an opportunity to meet the faces behind the meticulously made products. ओडिशा एक मतलब एक बहुत कल्चरल हेरिटेज से भरा हुआ है, आप सब जानते होंगे। तो वहाँ का जो मेन आइटम है कांसे का, जो हैंडमेड यूटेंसिल्स है कांसे का और पीतल का, इन दोनों को हम प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि अभी ये जो युग में ये मशीन से जो तैयार होने वाले जो बर्तन आ गए, जैसे कांसा भी आ गया और पीतल भी आ गया, तो अभी लोग इसको मतलब पूरा भूल चुके हैं, जबकि ये चीज़ें उससे ज़्यादा क्वालिटेटिव है, स्ट्रॉन्ग है और हेल्थ के ऊपर इन सब का बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहता है जो हैंडमेड चीज़ें होते हैं। As no festival or event in India is complete without food, Hunar Haat also set up a number of stalls offering several delectable items to relish. From Indian street food to famous Hyderabadi biryani to desserts, there was something for everyone. Hunar Haats are being organized in all parts of the country with the resolve of vocal for local and strengthen the idea of Atmanirbhar Bharat.
पहली बार मैं यहाँ आया हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि पूरी भारत इकट्ठा एक जगह हो गई है। मैंने जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि विविधता में एकता और जो डाइवर्सिटी इन इंडिया, वो रियली वो चीज़ मुझे आज दिख रही है। और ये तो मैं पूरा श्रेय हम नरेंद्र मोदी जी को देना चाहेंगे, हमारे नकवी जी को देना चाहेंगे। मतलब कि चाहे खाने का कोई आइटम हो या कपड़ा हो, पहनाव हो, किसी भी स्टेट का, किसी भी छोटे जगह का, लोकल पर वोकल जो मोदी जी का जो ये आवाज़ है ना, वो बुलंद हो रही है, वो दिख रही है। और मुझे लगता है पूरे भारतवासियों को इसको सपोर्ट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए और देसी चीज़ों को यूज करना चाहिए, विदेशी को त्यागो। हम भारतीयों में इतना हुनर है, इतना टैलेंट है कि हम लोग पूरे वर्ल्ड को अपने काबू में ले सकते हैं। Besides promoting craft and food, Hunar Haat also enticed the visitors with its musical and cultural program. The circus shows remained the major attraction at the 40th edition of Haat, as around 35 circus artists performed daily. Renowned artists of the country like Pankaj Udas, Anu Kapoor, Altaf Raja and many more who have performed at different Hunar Haats across the country were also felicitated at the event by the Union Minority Affairs Minister Mukhtar Abbas Naqvi. हुनर हाट में जहां एक तरफ हमारे दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर, कलाकार, ये तो हैं ही। हमारे देश की जो आत्मा है वो संगीत है, कला है। और हुनर हाट में हमारे देश के तमाम बहुत बड़े बड़े, बहुत उभरते हुए, बहुत जाने माने कलाकार अपने अद्भुत, अपनी शानदार कला का प्रदर्शन हर दिन करते हैं। Just within a short span of 6 years, Hunar Haats have been successful in providing employment opportunities to more than 9,50,000 artisans and craftsmen across the country, among which 50% are women. They are held as part of series of 75 Hunar Haats that are being organized under Azadi Ka Amrit Mahotsav to celebrate India's 75 years of independence. And in the end, we bring you a few short stories about the recent developments and happenings from around the world in our section of World in Focus. Growing edible crops used to be so hard for Kazi Zanapijo in drought-prone southern Madagascar that she would often have nothing but wild plants and cactuses to feed herself and her children until she started growing pigeon peas. The legumes, known scientifically as cajonas, are being promoted by CTAS, a local non-governmental organization dedicated to improving agriculture in the region because they are drought-resistant, highly nutritious and good for the soil. Nambulia kuraha farete talua fetsi namuka tstane. Lavia msa nambulia kwa mbatirele ya mbati zane titena namuka tena beza kwa dada fulu. Iye titena fihinako. Tsima vangwe rana tsima vangwe valunza tukapua kisantao. Itira nambulia no talu. Baghe dat nambulia kwetu balahazu faileni posi avao. Iere nambulia kutambati tu vangwaki tu tinazu wako vale sua. Ndati hata afak nazu wako vula bete afak male male. CTAS encourages farmers to switch to pigeon peas and provides training to support them. Although an increasing number, including Zanapijo, have made the change without CTAS simply because they saw the success of others. As a first step, farmers are encouraged to plant only pigeon peas in neat rows perpendicular to the direction of the wind. This helps halt erosion and over time replenishes the soil. Later, farmers can add other plants in between their rows of pigeon peas. Zanapijo now grows sorghum, maize, wheat and watermelons. Japanese company Panasonic has developed a sustainable smart town in Suta city of Osaka Prefecture. It is the third following Fujisawa and Tsunashima towns
which were both built in the Kanagawa prefecture. This Suta Sustainable Smart Town was developed by the cooperation among residents, local government, administration, university and partner companies. 私どもパナソニックグループは環境、そして暮らしと仕事で皆様のウェルビーイングへのお役立ちを通じて、お一人お一人の幸せの力になることをお誓い申し上げます。このような目指す姿を踏まえ、地球環境問題の解決と誰もが心身ともに幸せな暮らしを実現することを目指して、サスティナブルスマートタウンのまちづくりを進めております。長年弊社はメーカーとして家電などの製品作りをしてまいりました。そこで培ったお客様の暮らしに寄り添ってお役立ちを考える暮らし起点の発想でまちづくりの設計を考え、分野を横断するサービスやソリューションを実現してまいります。The smart city has optimal facilities like a condominium, a service apartment, a shopping center, and a childcare facility. The town offers a comfortable lifestyle and proper safety arrangements, including a daycare center, a community space, rental electric bicycles, and 4K security cameras. Rio de Janeiro's world-famous Samba School Parade finally kicked off after being postponed due to COVID-19 pandemic, attracting flocks of people at the much-awaited event. The parade, also known as Rio Carnival, is actually an annual samba dancing competition in Brazil. This year, Rio de Janeiro's 12 top samba schools, after the whole year of preparations, fight for the title of Carnival Champion in the event. In the year of 2020 and 2021, the carnival was cancelled due to the worldwide COVID-19 outbreak, and after a 2-year hiatus and 2 months postponement this year, the event has been underway at the Sambodrome. This year, the COVID-19 pandemic has added more impetus to the Samba schools, not only to celebrate life, but also to fight against the coronavirus, get rid of fear, and commemorate the deaths amid the pandemic. FANUC is the first Japanese company to develop a numerical control device. 今までロボットが馴染みがあるお客様もいらっしゃればですね、これからロボットを導入されるお客様いらっしゃるんですね。そういった中で最近はですね、新しくロボットを使おうとされるお客様の比率が上がってきています。そういった中で今までロボット、やっぱり専門の方じゃないと使えないなと、難しいなというイメージがですね、そもそも前提としてありまして、今回はですね、いや簡単なロボットもあるんですというところを皆さんにお伝えしていきたいなと思っています。The concept of FANUC's latest robot is that of a collaborative one. The technology to ensure safety is equipped. 今現時点でアメリカ、ヨーロッパ、中国、そして日本、ここの4拠点は非常に自動化が進んでいる地域になっております。ただですね、その一方で東南アジア、インドといったまた新しい地域においてもですね、同様に自動化の流れが非常に強くなって、すべて安心して生産工程導入した後もですね、しっかりとサポートしながらですね、お客様にとって生産効率が上がるような形で提供にどの地域であってもできるようにしていきたいなと思っています。FANUC's robot technology is required to realize autonomous production collaborating with human beings. That's all we have for you this week. Your comments and suggestions are important to us. Do give us your feedback at myindia@anin.com. I'm your host Uzma Jafri, and it's goodbye from the entire production team.